Okay, so I do have. So today we are going to perform and learn about Drozer, everything about the tool, not just explanation, but I'll show you how to do it. And I have created this sort of Word file where it includes the installation and what do we say? All the commands as well. Like whatever the commands majorly that you might be requiring to test any application for pen testing. So I have included all those details. So first of all, let's start with basic itself. What is this exactly? What is Drozer? So majorly, when it comes to tool, we have to majorly focus on the function part instead of what the tool does, because tool can have multiple functions, but it depends on how we use it, right? So in this case, it is basically a framework. It is called as a framework, which is used to test for multiple vulnerabilities, especially targeting for Android components. Now, tell me what are the components that we have learned? What components have we learned? Majorly four components we have learned, right? What were they? I have always told you that Contained you have to broadcast learn. receiver, Yes. So all that thing, activity, or you can say service, broadcast receiver, and if I'm not wrong, content provider. So that is the major four components. If I have to give you a short summary about it in case if you forgot, so let's recap. Activity is any sort of interface or any sort of UI activity that you're doing in the application, like touching a button, clicking a button, or typing something up, anything like that. Anything where you are directly interacting with the UI, right? Service is something that is going to provide something, like it might be a Bluetooth service or something like that. Any sort of service where the application is using the service to provide something. While in terms of broadcast receiver, it might be known as, the background processes, whatever the background processes that the Android gives to the applications, like a notification, vibrate feature, torchlight, those sort of things can be handled by broadcast receiver, right? And content provider is something that we can use it to share something, like if one application wants to fetch some data through other application, then content provider is such interface or medium that can be used to communicate with other applications. Okay. So I have already taught you many times about this one and how important it is for us to understand these components so we can find some unique sort of vulnerabilities and not just go for classic vulnerabilities. Right. So let's use Drozer today. This is a part of dynamic testing, and we are going to use or we are going to find vulnerabilities mainly with these components, and Drozer helps us to do that. Okay. So first of all, yeah, it was developed by Secure, and it has the capability to connect with ADB, right? So that's a good feature for us, and we will see why I'm going to use ADB today as well for it. So first understand what are the things or what are the functions that browser might help us to do. One is your application enumeration. So if I have to say, for us, in a pen testing point of view,
it will help us to enumerate all installed application that is in the Android device. It will tell us what permission is being there and basically how they interact with each other. It gives you that idea. That is your application enumeration. It gives you the idea. For example, if you want to check if the application is containing some privileged permissions, like some dangerous functions like accessing the location and things like that, even though the application is not meant to use those permissions. So that can lead to some sensitive exposure, right? Or sensitive data leak or exposure like that. So the browser might help you to identify all that. Okay. Next is your component exploitation. Now, in this way, it lets you identify components like activities, services, content providers, or broadcast receivers. So anything, any vulnerabilities that is related to these components, Drozer helps to identify. Like if we see if there is a content provider that is being exposed without any proper authentication or something, then it can lead to bugs like data exposure or data leakage or something. So you can find some things like that. Next is security misconfiguration. It is quite common to have misconfiguration in applications, and for you to test it, or browser can really scan if there is any misconfiguration like some weak encryption or some improper access controls. So it will really allow us to understand it, and as well as we can use browser to exploit it. So that is also one best part of it. Last is we can also use it for exploit development. Now, it basically means if we want to demonstrate or if we want to create a real life impact of a vulnerability to show the severity of it or something, then it also helps you to create exploit based on it. So yeah, it's like, Drozer is a all-in-one such tool that helps you to interact with the application and how it interacts with the components of these Android features, and it will tell you various ways on what is there vulnerability or not, and how you can interact with it, how can you test upon it, right? So it gives you all this information. Now, once again, I'll just go through how to install it, if in case you haven't yet. So basically, Drozer, you can visit this page, GitHub page, and we can see you can simply install this specific file, 3.1. Whatever the version is. You can install in the same directory wherever you want to connect your Genymotion or your emulator or something. And then basically this is how you install it. First of all, you might find this in your downloaded file or whatever directory you might save. And then you can use pip install and just verify if the browser is installed or not. So basically you can go where the directory is being present. So no, I have it in my download sections. Let's check here. Oh, by the way, is the recording on? I hope the recording is on. Totally forgot to inform. So let's check this out. Okay, so you can see already I have the Python. I hope it's visible. I don't know if I can zoom in Windows. Yeah, I can. Mm. So you can see I have this sort of thing installed, and all I have to do is open your CMD here and just see if the browser is properly installed or not. So for that, you can simply do browser version, and you might find. Okay, let's wait for it till it answers. Okay, so you can see. Okay, these are the major commands that the browser is using. We have various agent, console, exploit module. We can learn all that. Next, after you have verified that the browser has been installed, then what you can do is you have to install a browser agent. So let me just show how it would look like. Let me open up Genymotion. Till then, let me show कि वो कहाँ पे you know उसका लिंक कहाँ है. ओके, सो आपको लिंक भी यहीं पे कहीं मिल ही जाता है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था.
It was the version was 3 point something, probably this one. इधर ही कहीं ड्रोजर एजेंट भी होगा आई गेस मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दूसरा जो पीडीएफ बनाया था लेट मी चेक अरे let me just directly Google it up instead of doing all this. User agent APK, and you can just specify which version you want. If we just directly search the exact version, so let's see if we can find that. Till then, I'll also run Genymotion where I have installed the Drozer. Once again, to be honest, I forget whenever I install something. But I guess in my previous recording, you can, or maybe you just know how to install, or simply check the YouTube how to install it. I can't find the exact link right now. इधर ही कहीं होना चाहिए. If anyone find it, you can put it in the comment section. Anyway, you install it somehow. You can figure out your own way, I guess. Our application is still running, so let's just get back to it. So yeah, you also have to install the APK file, the agent APK file. In case if I find the link, I'll just send it in the group, so don't worry. I don't know why I haven't added in this PPT, maybe I forgot. और ओ वेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना मैंने लिंक यही तो लिंक ओपन किया था मैंने अरे ये रहा एजेंट एपीके यहीं पे पढ़ा है मैंने पढ़ा ही नहीं सॉरी सो यू कैन सी यू कैन जस्ट सिंपली विजिट द लिंक सो यहाँ पे सब कुछ है तो मैंने प्रॉपर आपको सब दे ही दिया है जस्ट डाउनलोड द एपीके एज वेल either you can install it with the, via adb install or what you can do just simply drag and drop to the mobile device whatever the emulator or android you're using like here is how the browser might look like as like interface hota hai वगैरह. So I'll show you how to connect the browser and things like that. So once the browser is installed, everything is like you installed with the pip version, and you can see this sort of interface. That means browser has have been successfully installed. Next, what you have to do, you have to do this each time, okay? On how you can connect the browser to the Android device, right? So for that, you have to turn on the Drozer agent, okay? And just turn on this one. Like, so it will start the server on the port 31415, whatever the port is. But ये चालू रखना है. You have to make sure that the server is on. And the next thing that you can do is ADB forward. You have to set up the port in the ADB itself, so both of them gets the same connection. Okay. So either you can simply copy paste or eventually when you use it a lot of time, you will just by heart it. Okay. Just showing exact method how you can connect to the browser. So you'll see something like, you can see the output that it is indeed connected. And now in order to finally connect it, you just have to use this specific command. And it should all be outside the shell, by the way. Don't go inside ADB shells or something. Just directly do this.
I hope it's visible. Let me zoom it up. सब कुछ ये पीडीएफ में दिया भी है if you want to refer. First of all, you will start the Drozer agent. एक बार successfully installed हो गया है. Now, how would you turn on this Drozer each time? You have to turn on the application and then you have to click the this sort of embed server button or something. Then you have to forward the ADB, forward TCP वगैरह, and then you can simply do Drozer connect, Drozer console connect. That's it. And just wait for a few minutes. Like you can see, it's connected with Nexus 4. बहुत ज्यादा zoom हो गया अभी तो. ओके, सो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा अभी के लिए साइड पे रखते हैं, ठीक है. And if the browser is successfully connected or installed, then you will get an interface like this one. ओके, सो अभी कमांड्स कैसे होता है, यहाँ पे रन कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कमांडों का लिस्ट इफ यू वांट एनी हेल्प, लाइक इफ यू वांट टू नो एनी कमांड्स, लाइक सीएमडी में, सॉरी लिनक्स में कैसा होता है, यू कैन सिंपली डू इन्फो और लाइक यू कैन डू हेल्प कमांड, सो यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ द टूल का ये, राइट. सो जस्ट रीड दिस वन आउट, ठीक है, बहुत ज्यादा है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन ईच ऑफ देम. इवेंचुअली यू विल यूज some of them will not be useful for you. तो यू कैन सी क्या क्या यूजफुल आता है. जितना जो कॉमन सर्च में होता है वो ये सारी चीजें होती है, which wait I'll show you. This is the commands that you will majorly use. This is like, you know, first command is यहाँ पे हम we are going to list all the packages. So what we are trying to do, if you want to get a list of installed packages, now packages means applications, okay, whatever the application is in the device, so we can simply run this command. Like यहाँ पे you have to do run, like command ही ऐसे start होता है, run app package. पहले मेरे को zoom करने तो in case if this is comfortable, so let's do that. क्योंकि अगर कोई फोन से ज्वाइन कर रहा होगा देन दिस माइट नॉट बी टू इजी, ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू रन दिस वन अप एंड इट विल शो यू, लेट मी जस्ट जूम इट अप, ठीक है. सो अभी आप देख सकते हो जितने भी पैकेजेस है, मतलब एंड्रॉयड में जितने भी पैकेजेस है सबका लिस्ट एक एक करके आएगा. मतलब अगर कोई डेव टूल्स हो गया, उसका कोई एप्लीकेशन है तो उसका पैकेज हमें दिख रहा है, ब्लूटूथ का पैकेज दिख रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें जो हम इंस्टॉल करके देखते हैं, then we can find it somewhere, like you can see. एक मिनट, बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा. ओके, लेट मी जस्ट अनजूम इट. टू बी ऑनेस्ट अगर इतना जूम हो गया ना देन आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हाउ टू इवन टाइप और सी. तो यहाँ पे देख सकते हो जेनी मोशन का सिस्टम पैचर का भी कोई ऐप है. So you can just get the idea of, like, you know, if there is any application, if you want to know the application name, application का package का name, then it will give you the information. Now अगर हम इसमें से कुछ देखते हैं, like let's take a real life application, जैसे seek jobs हो गया. seek jobs आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि probably मेरे यहाँ पे है. I have an application of seek. Let me just, you know, ध्यान रखना कि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ब्राउजर बंद हो जाएगा. सो इन द मिडल ऑफ टेस्टिंग जस्ट डोंट, लाइक यू नो, डोंट स्वाइप ऑफ द एप्लीकेशन और समथिंग. यहाँ पे देखो सीक जॉब्स करके एप्लीकेशन है तो उसका पैकेज हमें मिल रहा है. सो लेट्स जस्ट टेक अ रियल लाइफ, क्योंकि आई डोंट लाइक डीवा वीवा छोड़ो, रियल लाइफ का ही देखते हैं, राइट. वो एक एप्लीकेशन है, उसका बाउंड्री प्रोग्राम भी है, ठीक है. तो वी कैन टेक दिस इज द एप्लीकेशन पैकेज नेम. अभी हमें अगर पैकेज का ज्यादा डिटेल चाहिए, लाइक if you want more details of our package, then you can use the command, basically run app.package, and then you can say I want the information, so info, and you are selecting the package name. So just hit enter. और अभी के लिए लेट मी शो यू, ये हम वी वर रनिंग दिस कमांड एग्जैक्टली, ठीक है. यू हैव टू रिप्लेस द com.example.app, इसको रिप्लेस करके जो पैकेज नेम है वो डाल देना अगर आपको पैकेज इन्फॉर्मेशन चाहिए.
So it will like give us the details of permissions or activity service. ऐसा कुछ के थोड़े थोड़े हमें details मिल जाते हैं. Like if I have to explain, then first of all, the package name itself is au.com.seek. वो उसका package name है, ठीक है. And then we have a version of it. कि currently the application version is 14.48.0. That is the current version of the application. And this data directory shows you कौन से path में वो store है, ठीक है. हाँ, और ये भी एप्लीकेशन का पाथ कहाँ पे स्टोर है वो सब भी बता देता है. लाइक कभी कभी हमें पाथ की जरूरत पड़ती है, सो यू कैन यूज ड्रोजर. उसके अलावा भी हमारे पास बेसिक कमांड्स भी है. ये है यूजर आईडी, मतलब उसका एप्लीकेशन का. जब व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द क्या बोलते हैं सैंड बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट के हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग यूआईडीज रहता है. सो दिस इज द एप्लीकेशन यूआईडी. कभी कभी इंपॉर्टेंट, अगर हमें कुछ प्रोसेस को टर्मिनेट करना हो, एप्लीकेशन सही से बंद नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्टली प्रोसेस आईडी को टर्मिनेट कर सकते हैं. प्रोसेस आईडी यूआईडी के साथ होता है इसके लिए, ठीक है. अब आई डोंट नो व्हाट इज जीआईडी. सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ परमिशंस दिखा रहे हैं, राइट. वी गेट बंच ऑफ परमिशन. सो whatever the application permissions, even if it's normal or dangerous, that can be shown here. So we already know access, network, state, internet. Those are like normal permissions. But if we see, we have a biometric, fingerprint, वो सारे चीज के डिटेल है. So that means uh, this is also sort of dangerous, I can say, because इसमें भी use हो सकता है. Then we have notification, like we have bunch of what do we say? We have bunch of परमिशंस. जितने भी नॉर्मल और डेंजर परमिशंस है उसके बारे में वी आर गेटिंग सम एक्सेस, राइट. यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास रीड एक्सटर्नल स्टोरेज है, राइट. दैट मीन्स दैट इज सॉर्ट ऑफ डेंजरस फंक्शन. एंड यू कैन फर्दर टेस्ट अबाउट दिस एज वेल इफ यू वांट. अगर आपको परमिशन के बेसिस में कुछ देखना हो तो आप कर सकते हो. बट करेंटली वी नो दिस इज एप्लीकेशन दैट माइट बी यूज टू स्टोर एनीथिंग एक्सटर्नली, तो उसके लिए में भी यूज हो रहा होगा. और अगर ये एक्सटर्नल स्टोरेज if they can lead into unauthorized access to files, like using use fingerprint or use biometric, and you can also exploit in that way, or you can try to exploit it in that way if the fingerprint functionality is not secured properly, right. तो वो तुम देख सकते हो. So this is how permissions के basis में तुम्हें टेस्ट करना हो तो you can do it. And now, if you want to check exported components, now that is the main thing. We have always talked, okay, what is exported components? जो पे भी मतलब कहीं पे भी ट्रू दिखा रहा है, लाइक एनी एक्टिविटी. हम अभी एक्टिविटी का स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है. नहीं, एक्टिविटी नहीं, अभी हम जनरली कंपोनेंट्स कितने एक्सपोर्ट हुए ना उसका एक नॉर्मल लिस्ट निकाल रहे. सो वी कैन व्हाट वी कैन डू इज आई जस्ट सिंपली टेक इट. आई and I'll put it here, and I'll mention the package name, that is uh, au.com.seek, and I'm running, like मैंने इसको रन किया. तो अभी ये कमांड क्या करता है? सो इट विल चेक फॉर any exported components like your activity, broadcast receiver, content provider, or and broad service, जो भी है. it will tell you whatever exported, मतलब कितने सारे टोटल वो components है वो exported है. So in this case it is showing you 4 activities are exported, right. And here it says 3 broadcast receiver is exported. Content provider 0 है, मतलब कुछ उसका फीचर नहीं. So if you don't have to test this further, ठीक है. और ये 2 सर्विस एक्सपोर्टेड है. Now what we can do फॉर आज हम एक्टिविटी और ब्रॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक को टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है. ऑल्दो आई कैन मेक इट लाइक ओवरऑल जनरल कि क्या क्या कर सकते हैं. लाइक ड्रोजर इज समथिंग, अगर आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस, if you are interested to find vulnerabilities related to components, तो तुम्हें 2-3 दिन आराम से निकालना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी. सो ये ऐसा चीज नहीं है कि एक सेशन में आई कैन कवर एवरीथिंग अप. इट इज समथिंग दैट एप्लीकेशन भी रियल है, राइट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो उस पर रिसर्च करते करते टाइम बहुत चला जाता है. तो हम कमांड्स के बेसिस में इसको फिर भी कर सकते हो. अभी हमें ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन आया, वी वर एबल टू लिस्ट ऑल द पैकेजेस, आउट ऑफ विच
we selected a target. Suppose we have a target in mind pre-handedly. We selected that package and we just wanted to check कि क्या क्या exported components पहले है. So we got the idea चार activity मतलब majorly हम तीन चीज को देखेंगे. एक्टिविटीज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्सपोर्टेड है और सर्विस भी एक्सपोर्टेड है. तो हम मेजरली इस पे देख सकते हैं. चार है मतलब एक्टिविटीज ज्यादा एक्टिविटीज रिलेटेड हमें बग्स भी बहुत थोड़ा सा इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सप्लॉयटेशन. So we can check on that one, right? Activities are like usually the entry point of the application. So if this is exported, that means other applications, or if you are creating a bad application like malicious application, it can get the access, right? And we can also perform intent based attacks and all. Intent based attacks we can perform, right? So we can check all that. Now let's see कि क्या कौन से एक्टिविटीज है वो एक्सपोर्टेड है. So इसमें बता सकते हैं enumerating exported activities. So you can simply just run this command. It says run app.activity.info and जो माइनस है जो हम अभी एप्लीकेशन का पैकेज है उसको हम रन करा सकते हैं. So simply we can do, let's say, एप्लीकेशन का नाम मैं भूल जा रही हूँ पैकेज बार बार, बट लेट्स सर्च. कहाँ गया? au, होपफुली यही है, au.com.seek, राइट? हाँ ये रहा, उधर ही है. ठीक है. सो नाउ वी कैन चेक. नाउ वी आर एबल टू चेक. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो एक्सपोर्टेड होंगे, लाइक कौन सा एक्टिविटीज. नाउ इट कुड बी there can be multiple, to be honest, activities that can be exported. Majorly what you can look for is, as far as I remember right now, बहुत सारे होते हैं बट कुछ कुछ चीज है जो हो सकता है. इंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देर इज एनी इंटेंट सिक्योर फिल्टर, if there is any intent filter, तो उसके related you can see, or any exposed functionality, कोई भी functionality है जो थोड़ा which can lead to sensitive function of the application. If the application is able to fetch the token, if it is you know storing some databases or something, those sort of things. So you can also test for checking if any exporter or any components is able to expose the functionality of it. Or you can, majorly चारों में एक चीज common है, hijacking. You can always, try for hijacking. Are you able to hijack a component or something, right? So it is common in all the other services or all the other components as well. Okay. Next is, can you test for privilege escalation? As of now, these are the only few things that I can remember. But there are multiple things. But let's see इसमें क्या है. So you can see there are 4 packages that is being exported. Here we have deep link, okay, deep link something, and there is no permission given as well. So that is not truly a good sign, but it depends on कि वो क्या करेगा, but we'll see. यहाँ पे है main view brand deep link activity, okay. Now target activity, presentation वगैरह, okay. मतलब ये दोनों connected है. Next, we also have a auth 0 dot Android provider. Now that is basically mainly auth जो भी है उसका सब authentication के ways में वो use होता है, right? And we also have Android X Compose UI preview. देखो अगर preview दिखता है तो that means you can make a guess that it is related to, or what do you say? It is related to UI. Yeah, it is related to UI. ठीक है. So you can get that idea. So first of all, लेट मी टेल यू जहां तक मुझे पता है इस चीज के बारे में, दैट इज अगर डीप लिंक प्रेजेंटेशन एक्टिविटी, सो इट बेसिकली मीन्स that the other application, first of all, here the permission given is null, that means none, so it basically means that there is no permission, first of all, that is associated with this specific package that is being exported. Now it can be invoked by other application, so they don't need any authorization because there is no permission here, right? So you can test for deep link vulnerabilities as well. Like this gives us the possibilities के since exported है तो हम टेस्ट कर सकते हैं उस पर. We are not saying कि कुछ हमें अभी तक मिला, but we got a lead, So we can test for deep link vulnerability क्योंकि दोनों जगह exported वही mention किया है. And अगर हम इसकी बात करें, मेन व्यू की बात करें, तो भी ये एक टाइप का इंटेंट है बिकॉज उसमें टारगेट दिया है. वो अगेन किसके साथ कनेक्टेड है? ऊपर के पैकेज के साथ ही कनेक्टेड है. सो इट कैन बी लाइक एन इंटेंट चेन. सो
एंड अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, वी कांट कंफर्म दैट व्हाट functionality can this really be used because it's exported. But yeah, we can try to do some intent, जो उसमें already मैंने mention कर दिया है, कुछ भी intent filter का issue है वो हम देख सकते हैं. I'm just giving you the possibilities of how we can think of targeting next, you know. So you can map this up. To be honest, no, I'll tell you what how you can map and all. And we have also auth 0 evo. So I already said it is related to authentication. That means it can, like, I'm just saying it can handle some sort of redirection because इसमें redirect activity भी बता रहा है. That means for authentication, like logging in or something like that, or bypassing something, it might be connected to a URL or a browser or something like that. Like it might be connected to redirection, right? So तुम उस पर open redirection का सब try कर सकते हैं ऐसा. These are things that we have a lead now कि हम ये test कर सकते हैं. And preview, इसका कुछ खास ये नहीं है, like it's just preview activity. I skip usually. If you want to test, you can. सिर्फ UI के elements में, मतलब UI में जो activity है ना, उसके related होता है. So अगर देखो, अगर आप UI के related भी आपको कुछ complaints है, या फिर if you do find some bug, you can report it under insecure design. You know, insecure design of application functionality. That means कि भाई कुछ तो, मतलब कहीं पे भी अगर उनके UI पे कुछ फ्लॉ है, एज सच कुछ डायरेक्ट बग नहीं है, बट स्टिल उनका डिजाइन की वजह से, मतलब इनसिक्योर डिजाइन की वजह से, इनसिक्योर डिजाइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, इट कैन लीड टू सम मिसयूज ऑफ द फंक्शनैलिटी, ऐसा कुछ बोल सकते हो. ऐसा इट्स नॉट अ हाई इम्पैक्ट बग, इट्स लाइक वेरी लो सॉर्ट ऑफ, डिपेंडिंग. अभी प्रीव्यू हो तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, दैट्स द ओनली रीजन. ऐसा हो सकता है. It will totally, these things, it will now, अभी इतना हमें possibilities पता है. These are the possibilities that we can try. In this specific application, we can try for deep link or auth वाला. ये दो interesting चीज है. Personally, if I want to test, I'll test for deep link functionality or, redirection, like these authentication, redirection testing and all. So majorly I'll go for this, अगर मुझे करना हो तो. Right? Now, अगर ये तुम्हें दिख रहा है, ये activity दिख रहा है, so how will you run it? सो फॉर दैट, मेजरली अगर इसमें हम नॉर्मल कमांड्स देखा जाए ना, लाइक एज फार एज आई नो, वी कैन डायरेक्टली रन द कमांड, लाइक वी कैन रन द एक्सपोर्टेड component. आई एम जस्ट, भाई ये ठीक है. सो यू कैन जस्ट सिंपली रन दिस कमांड. और अगर तुम्हें, ऐसा, तो तुम्हें यहाँ पे ऐड करना होगा, लाइक जो अभी अब अपने लिए कौन सा है, ये हमारे लिए पैकेज ये हुआ, राइट, द कंपोनेंट और द एक्टिविटी का जो स्पेसिफिक लिंक है वो ये हुआ. सो यू कैन जस्ट सिंपली ऐड दोस. बट व्हाट आई डू, आई जस्ट एग्जिट द टर्मिनल. आई जस्ट एग्जिट द टर्मिनल एंड आई टेल यू कि मैं कैसे एक्सपोर्ट कराती हूँ इन माई केस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सही से अंदर ब्राउजर के अंदर क्यों नहीं होता. बट आई जस्ट डू इट दिस फ्रॉम स्टार्ट बिकॉज आई सीन इट समवेयर. So usually I'll just call the ADB shell and I'll start it from here. And that's where I'll mention the package. Like, first of all, our package name is au.com.seek, right? And in here, अभी मुझे ये specific select करना है. Suppose auth वाला ये, क्योंकि वो just interesting है. इसका इसका impact obviously थोड़ा ज्यादा लगता है as compared to other. And I can just simply copy paste here, ठीक है? ऐसा, and I can just hit enter. So you can see intent has been started. अब obviously application में कुछ हुआ नहीं है because ये अंदर का कोई part है. Got it? So मुझे इसके अंदर पहले application functionality पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे authentication system कहाँ हो सकता है, कहाँ पे redirection का chances है. So वो मुझे application पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाके I can do ऐसा. Got the idea? So that is majorly about how you can start an application component. Like तुमने पहले ढूंढा कि क्या क्या चीजें exported है. That is your first step with Drozer. After then you listed out which component is being exported. So here we are testing the activity. Now you're going to check what are the things that is being exported. क्या attack surface क्या है उसका. See, we got bunch of details, right? जैसे कि हमें ये सारा मिला, लाइक ये सारी चीजें मिले. अभी इसमें भी हमें स्पेसिफिक सर्वर कुछ स्टार्ट करना था. लाइक हमें अगर ये ऑथ लिया या फिर प्रीव्यू वाला लिया, वी वांट टू चेक द कंपोनेंट हाउ इट वर्क्स इन द बैकएंड. समझ रहे हो? अब बैकएंड में काम कर रहा है, दैट मीन्स कि ये कैसे आई कैन ऐड समथिंग एज वेल. इसके अंदर मैं कुछ और पेलोड डाल के भी बेच सकती हूँ इफ आई वांट टू टेस्ट फर्दर, राइट? सो यू कैन डू दैट.
So this will tell you if और कहीं पे भी तुम्हें एरर दिखेगा तो तुम आइदर फिर से एक एडीबी लॉग कैट चालू कर सकते हो टू चेक हाउ द एप्लीकेशन इज इंटरैक्टिंग व्हेन द इंटेंट इज बीइंग कॉल्ड, राइट? वो तुम चेक कर सकते हो. देयर आर लाइक मल्टीपल पॉसिबल वेज, दैट विल टोटली डिपेंड कि हम कैसे उसको लेंगे. गॉट इट? So yeah, that is majorly about activity. नाउ ये हुआ एक्टिविटी का चीज. अभी बाकी का होता है ना, वो तुम्हें मैप करना होता है. आई टोल्ड अबाउट मैपिंग, राइट? जिसने भी शायद वेब का भी बैच लिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा. मैपिंग इज इम्पोर्टेंट इंडीड. आई like I struggled with mapping a lot, and that's why I used to get confused on how to, how to structurally approach the target. In this case, what it basically means, if you have an application and we are testing for components, right? So अभी हमने देखा कि I can create a mapping structure in my head that I'll cover up 4 activities exported. Like I'll check all the exported today, or like I'll check each of the activity. मतलब पहले I'll try to find कि ये specifically deep link किसमें connected है. तो उसके लिए मुझे पहले application structure पढ़ना होगा. I'll check where the deep link is being connected with the application. And next is if there is a authentication or something, I'll check in the application कि वो कहाँ से कनेक्टेड हो पा रहा है, राइट? कहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन प्रेजेंट है, किस वे में प्रेजेंट है. सो वो एक आइडिया होता है. मैपिंग इज जस्ट लाइक एन आइडिया और a स्ट्रक्चर वे ऑन हाउ यू विल अप्रोच इट, एंड दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट्स द रिजल्ट इज. हमने अभी एक रैंडमली एक एप्लीकेशन लिया है एंड हमने देखा कि ठीक है इसमें एक्टिविटीज है. कोई कोई इसमें एक्टिविटी कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा कम पॉसिबिलिटी है. कोई कोई इसमें ये बहुत ज्यादा हो सकता है, या ये वाला बहुत ज्यादा हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एप्लीकेशन इज बीइंग स्ट्रक्चर, तुम्हें भी उसके हिसाब से टेस्टिंग को भी थोड़ा स्ट्रक्चर करना चाहिए. सो यू डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने पहले ये लिया, इसको टेस्ट किया, फिर कहीं और से लिया, फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, फिर अचानक से कंटेंट प्रोवाइडर पे जा रहा हूँ. सो ऐसा कंफ्यूजन करोगे तो यू माइट मिस समथिंग दैट कुड बी इम्पोर्टेंट, राइट? So you can map it according to how you want. नेक्स्ट अगर हम देखा जाए, सो वी हैव, ये हो गया अपने एक्टिविटी के बारे में. नाउ सर्विस के बारे में भी सेम ही होगा. लाइक सर्विस भी सेम ही होता है. अगर हमें सर्विसेज का देखना है फिर से, तो यू कैन सिंपली रन ऐप डॉट सर्विस डॉट, ये वो कमांड इज प्रिटी इजी अगर आप एक बार देख ही लोगे तो. आई जस्ट टाइप इट डाउन. Like we have app.service dot info, and we can mention now apna what do you say, package name, that is au.com.seek, seek, right? And I can, okay, sorry, let me get, पहले फिर से मुझे कनेक्ट करने दो ड्रोजर कंसोल कनेक्ट. उसके बाद ही ये रन वगैरह चालू होगा, है. सो लेट मी जस्ट इंसर्ट दैट. भाई यार बार बार टाइप करने में थोड़ा सा अजीब रहता है. रन app.service dot info minus a, and we have to mention the package, that is au.com.seek. ठीक है. I'm gonna hit enter. Now we can see हमारे पास बहुत कम सर्विस है यहाँ पे, राइट? बस दो ही है. पहले ऊपर हम देख लेते हैं सर्विस में कितना लिखा था, 2 एक्सपोर्टेड है, राइट? सो एग्जैक्टली इसमें 2 ही बता रहा है कि 2 चीज एक्सपोर्टेड है. Now what you can see here, let's understand कि ये क्या सर्विस है. देखो अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो आप सिंपली गूगल अप भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सर्विस या सारे एक्सपोर्टेड कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, बिकॉज वो डेवलपर का काम है, उनको पता होना चाहिए. हमारा काम है कि हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव साइड देखना चाहिए हर चीज का, ऐसा. तो अगर कुछ नहीं आता है तो यू कैन सिंपली गूगल इट अप ना. ये बहुत कॉमन है जो सर्विस है, मैंने बहुत बार देखा है. सो आई कैन से अगर कोई और होता तो मे बी आई वुड ऑल्सो गूगल इट अप. तो ये नेम होगा, ये सर्विस का नेम है, एंड्रॉइड एक्स वर्क डॉट बैकग्राउंड सिस्टम जॉब, ये वो वगैरह वगैरह. सो व्हाट दिस इज एग्जैक्टली सेइंग इज, कोई भी अगर बैकग्राउंड के रिलेटेड कुछ ऐसा सर्विस है, इफ द एप्लीकेशन wants to connect, like in this case it is connecting with, what do we say, API signing of it. So probably it's like related to Google API signing, like Google ka auth API signing, like that. So if there is any, like, notification that is being exactly there to connect with the application, so it can provide that.
ठीक है। और इसमें भी परमिशन भी सेलेक्टेड परमिशन है, राइट, कि सिर्फ ये ही एक्सेस कर पाएगा। ये हुआ उसका सर्विस, बट ये ही सिर्फ स्पेसिफिकली ओनली दिस कैन हैव द एक्सेस। सो सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक लिटिल सिक्योर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एटलीस्ट परमिशन इज नॉट नल। समझ रहे हो? तो हमने कोई अगर एप्लीकेशन बनाया है, एक मेलिशियस एप्लीकेशन बनाया है कि चेक करने के हम सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी परमिशन डाला है। सेम केस यहाँ पे भी परमिशन दिया है, राइट। सो ये भी इट्स रिलेटेड टू बैकग्राउंड जॉब सर्विस, लाइक बैकग्राउंड में जो भी होता होगा, ऐसा। लाइक ये कुछ काम का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये सर्विस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई डोंट हैव मच some good information to give about that as well. ऐसा. So agar, but if you still want to test upon a service, so you can try to, using this specific thing, you can try to send some, what do we say, some malicious data to see if how they, control, how they have access control, like how how uh, how proper they have when it comes to access control, or can you do anything if, or can you perform any unauthorized actions in the background. And अगर हम इसका बात करें revocation bound service का, then we can try to see, can we like try to bypass the permissions or something. Can you really like, can this, अगर हम कहीं और से ले रहे हैं, अगर हम कहीं और से कनेक्ट कर पा रहे, so does it denies the access and all, ऐसा। so वो चीज तुम ऐसा सोच सकते हो। एंड सर्विस को स्टार्ट करने का भी सेम चीज ही है। बैकग्राउंड में तुम्हें एडीबी जाके जो पैकेज है सेम टू सेम है, बाकी के सारे सेम ही होते हैं, ऐसा होता है। सो दैट इज मेजरली अबाउट सर्विस। इसमें कुछ खास नहीं, तो आई डोंट हैव मच टू से। बाकी के सारे चीज में सेम ही प्रोसेस होता है। जैसे कि अभी कंटेंट प्रोवाइडर्स इसमें जीरो है, राइट। तो अगर कंटेंट प्रोवाइडर है तो भी तुम्हें सेम ही चीज होगा, रन ऐप डॉट प्रोवाइडर फाइंड यूआरआईज। अब इन दिस केस देखते हैं एरर कैसे थ्रो होता है, मतलब अभी तो इसने तो जीरो बताया, राइट। तो लेट्स सी कि वो कैसे बताता है। हमारे पास पैकेज नेम au.com.seek और हमने रन किया, so it says it's scanning, ऐसा। So it will show you like everything, like it will show all the content providers that the application is exposed, so you can check if, if they are securely, properly, or if they allow any sort of unauthorized access or something like that यहाँ पे। तो यहाँ पे as such कुछ important content provider है ही नहीं। ये सारे basic चीजें होती है, ये हमेशा active रहता है most application में। तो इसके लिए ऐसा कुछ कंटेंट प्रोवाइडर दिया नहीं जिससे कोई और एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर पाए, लाइक करके भी कुछ फायदा हो ना, वैसा वाला नहीं है चीज, ऐसा। सो नॉट मच टू रियली फाइंड हियर एज वेल। इसमें क्या होता है, मेजरली यू विल फाइंड बग्स लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा लीकेज, यू कैन फाइंड डेटा लीकेज या कैन यू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ऑल, वो सारे बग्स कंटेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू यूजुअली मिलता है तुम्हें। एंड अगर हम फिर से ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में कुछ बात करें, तो फिर सेम, लेट्स जस्ट, तुम्हें पहले वही रन करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेस्ट सम अदर एप्लीकेशन, एंड वहां पे कुछ तुम डाल सकते हो, लाइक यू कैन रन मल्टीपल क्वेरीज ऑन इट, बेस्ड ऑन इट, ऐसा। एंड अगर सेम तुम्हें ब्रॉडकास्ट रिसीवर करना है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे सर्विस या एक्टिविटी के बदले हम ब्रॉडकास्ट डाल रहे। कमांड्स तो सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, ए और यहाँ से यू विल सी इफ देर इज एनी ब्रॉडकास्ट रिसीवर समथिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो फायरबेस का इंस्टेंट आईडी है, परमिशन दिया है, सिक्योर है, मतलब सिर्फ यही सेंड कर पाएगा, सिर्फ गूगल ही वो फायरबेस से कनेक्ट कर पाएगा। डायग्नोस्टिक रिसीवर, डायग्नोस्टिक रिसीवर है, फायरबेस, ये सारे बहुत कॉमन होते हैं, इसमें मतलब कुछ खास है ही नहीं, ये एप्लीकेशन में इतना कुछ खास है नहीं। यू कुड हैव चूजन सम अदर टारगेट, अब नहीं है तो क्या करें। तो या ऐसा। So in the real life hunting, we will be doing that. Like I'll be showing कि how I usually map it up. अगर if I'm taking a target, when do I usually jump to find vulnerabilities with content providers and all. So that is majorly about it. And एक और चीज है, we also have to, let me see, वो है ही, हाँ, ये सारे चीज तो हो गए। अगर आपको दिखता है ना यहाँ पे कुछ, if you see any sort of packages, like you can see कहीं पे भी अगर आपको परमिशन नल दिख रहा है और कोई अच्छा, लाइक देख के ना थोड़ा बहुत आइडिया, लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत देख के अंदाजा लगाना पड़ता है कि यार ये कैसा, लाइक दिस लुक सस्पिशियस, व्हाट काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट सर्विस इज दिस, ऐसा। और गूगल करके भी तुम्हें पता लग रहा है कि वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस पर रन करा सकते हो, लाइक यू कैन सिंपली रन इट अप, यू कैन सेंड मल्टीपल
You can send multiple things like that. You can put some actions like अगर मैं ड्रोजर सब कुछ चालू रखूं मेरा पीसी बहुत हैंग हो रहा है. That's what I feel. Okay, so you can literally send some action, and here you can mention some intent and all. To be honest, I use ChatGPT to create intents and scripts and all because इसका मुझे तो पूरा by heart करके कुछ पता नहीं होता ये सब चीजें. So I'll simply use AI to help me create custom intent if I want to. अगर कोई भी है अभी इस पे तो कुछ है नहीं as such, तो क्या ही बेच सकते हैं ऐसा. So that's what you can say. You can create something if अगर कोई permission, in this case majorly सारे में permissions ही है, अच्छा खासा permission है. So you can say, you can guess कि ये थोड़ा बहुत safe है, right? Okay. Now, last thing that you can check for, it also helps you to check if there is any, like, if there is application that is running in debug mode. Like, if the application can or is running in the debug mode. हमने बोला ना, if there is any debuggable code that is present in the application or the interface, then we can simply run this up. अभी एक already connected है, तो Drozer के साथ, sorry, the application is connected with the Drozer, so you can simply run the command. And if the application is running, like basically इसका impact क्या होता है? Run. ओके, सो अगर आपको स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन करना होता है कौन सा डीबगेबल उसके अंदर होगा, सो बेसिकली आपको लिस्ट के अंदर दिख जाएगा व्हेन वी लिस्ट ऑल द एंड्रॉइड एक्टिविटी और समथिंग. सो इफ इट्स वल्नरेबल देन इट माइट बी, यू नो मेजरली इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इट वुड बी इजी फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग के वक्त सही नहीं होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो से इट इज वल्नरेबल टू RCE. like you can use like to test for all that you can use ADB. ऐसा चीज हो सकता है. So that is majorly about it. So yeah, in short, if I have to summarize, then I'll say कि Drozer can be helpful. ये बस आज के दिन ऐसा था कि हम कैसे इसको, how do we use this Drozer? Like how do you have to get started with Drozer? ऐसा. So first of all, knowing कि वो क्या क्या चीज कर सकता है, right? हमें सब चीज का we can try to do information gathering where we are trying to understand application में क्या क्या चीजें features है, क्या क्या exported है, किसके साथ कर रहा है, how can we find the attack surface on it, and based on it we can test for exported activities or service or whatever the component is for any sort of vulnerability. And we can also test for any we can test if the application is doing any unauthorized data access. ऐसा अभी content providers ये वाले application में इतना कुछ था नहीं, but you can test with other applications and let me know okay how do they provide results and all. And if you see there are if you see any actions or any services जो इतना relatable नहीं है, then kindly Google it up, don't ignore it, क्योंकि वही चीजें फिर तुम आगे जाके ये कर सकते हो. You can also see अगर कोई application debug state में भी चांस हो रहा है तो उसका exploitation का risk बढ़ जाता है. Like we can really test it up easily sort of thing ऐसा. So that is majorly about Drozer. This is how. And even while you are hunting, when you are testing the applications, these commands, I hopefully ये commands आपको सब helpful आ जाएगा. So you can test this up. उसके अलावा भी अगर आपको देखना ही है कि और कौन से चीज आप यूज कर सकते हो, तो आप सिंपली लिस्ट करके उसको अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जो करना होगा. Right, there are multiple ways for it. You want to find the libraries of it. If you want to get a list of all permission that is used by packages on the device, तो तुम specific use कर रहे हो, ऐसे सारे. तो ये सारे चीजें अगर आप चाहो तो धीरे धीरे टेस्ट कर लेना. Once you get your hands on it, then I think it will be easy for you and this will be good for you to understand. यहाँ पे SQL का related और SQL related vulnerabilities can also be helpful. You can also use Drozer to find any SQL injection vulnerabilities. So वो भी एक चीज होता है. And if you want to test anything, like अगर जैसे यहाँ पे देख सकते हो, you have the option to upload a file, any malicious file अगर आपको transfer करना है कोई specific component के अंदर to test how it will behave in the backend, तो वो भी कर सकते हो.
ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है अभी के लिए, इट्स बेटर टू एटलीस्ट गेट यूज टू ऑल दिस, ऐसा। तो ये रहा अपना, सी यू कैन ऑल्सो गेट मैनिफेस्ट फाइल ऑल्सो, अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है कोई पैकेज का मैनिफेस्ट फाइल, लाइक आपको जेआईडीएक्स नहीं चलाना है, ड्रोजर ही चलाना है, तो उससे मैनिफेस्ट फाइल ढूंढ पा रहे हो। एंड यू कैन स्टार्ट एनी सर्विस इफ यू वांट, यू कैन स्टॉप द सर्विस, उसके सारे कमांड सब कुछ दिए। सो इट्स प्रीटी गुड, यू कैन check this out, a nice tool for you to pen test with things. There are multiple tools that people use. Drozer is also one of the one, They also have a commercial tool, and this one is like, community, like open source है, देखा जाए तो. So yeah, and don't worry, जितना आप उसको यूज करोगे टूल को, उतना आप फेमिलियर हो पाओगे चीजों को लेके, राइट? और इसके वजह से आप अलग अलग चीजें सीख पाओगे, लाइक यू विल learn or you will understand various types of vulnerabilities. You can have an experience of how the application is interacting with the components, or how is it behaving, and how you can be, how you can try to manipulate them and try to find bugs with that as well. तो आई होप ड्रोजर वॉज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू, और ये प्रैक्टिकल से भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, और बाकी का तो रिकॉर्डिंग अब से अच्छे से चल रहा है, तो यू कैन रीवॉच द रिकॉर्डिंग इफ यू हैव एनी डाउट, एंड यू ऑल्सो हैव अ फाइल टू रेफर, राइट? पहले अगर आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पा रहे हो, या जिसका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यू कैन ट्राई ऑल दिस कमांड्स आउट, एक टारगेट उठाओ और करो उसमें से। वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, यू कैन गूगल इट अप, और यू कैन आस्क द एआई कि भाई ये है, तो इट विल टेल यू कि ओके ये है, will give you the easy information for it. To be honest, because I didn't find much content in YouTube or something, or even in blogs. So yeah, you can, you might not find too much resources on it. That's about it. So do you have any doubt?